setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. This is exclusive with me, Shavan Sen. Tonight on This is Exclusive, I come to you with three exclusives, starting with what's really happening in Nepal. You saw similar protests actually taking place in Bangladesh just about a couple of months ago. And now in Nepal, not to forget what we saw just about a few years ago in Sri Lanka. Is there a pattern that is developing in South Asia? Tonight, we decode what's really happening in Nepal. The other big story that I'm going to get to you tonight is the conversion racket that has been unearthed in the state of Uttar Pradesh. And how exactly is it linked to a foreign country? All this and much more in this edition of This is Exclusive, and coming up, a very special interview on Gen Next reforms. All this and much more. But up first, let me take you through the headlines we're tracking at this hour. Violence and anarchy reigns in Kathmandu after protesters stormed parliament over social media ban order, 18 killed in clashes. Shoot at sight order issued in Nepal as Kathmandu battles riots. KP Oli government calls for emergency cabinet meeting. From Lucknow to Balrampur, dangerous convert India plot at play. Pakistan's ISI allegedly involved in the racket. Multiple incidents of stone pelting reported in Karnataka's Mandya as Ganesh Visarjan procession targeted, 21 arrested, 2 FIRs registered. Ladies and gentlemen, Nepal's capital city of Kathmandu has been gripped by escalating protests that have turned deadly. Tens of thousands of young Nepalese have taken to the streets in a display of defiance against the KP Oli government's recent ban on 26 major social media platforms. This controversial decision, enacted on 4th of September, has now sparked widespread outrage. But the protests are about far more than just social media restrictions. They have evolved into complete anarchy on the streets that has now taken the city into hostage. Violent clashes, stone pelting, tear gas shells. These are some of the aspects that summarize what has unfolded over the last few hours. At the heart of this unrest is a growing frustration with Prime Minister KP Sharma Oli's administration, which protesters and analysts alike say has failed to address systemic issues like corruption and mismanagement. The social media ban, has justified by the government as a regulatory measure, has been seen as a final straw. But what is unfolding in Nepal isn't a protest. It's complete disregard for law and order. Frame by frame, let's now take you through the pictures, and in a short while from now, former Deputy Prime Minister of Nepal would be joining us on this broadcast. What is it that the opposition parties in Nepal have to say about this? I'm going to bring him in a short while from now. First, a quick recap of what we know so far. On your screens, this afternoon, it was the protesters out on the streets protesting against the KP Sharma Oli government. What you see right now on your screens, these are banners that have been put up. In fact, some have asked the resignation of the Prime Minister. This is not now evolved into what the protesters say, complete anarchy and corruption that has been plagued, the government has been plagued with. And that is the reason why they're saying that this is no longer about just a social media ban and an attempt to muzzle their right. Fundamental right is what they call in. And what you see is the response. Ambulances basically being brought in because over 16 people are feared dead.
And not just that, there are several others who have now been injured. Let me also bring in Rajendra Mahato, former Deputy Prime Minister of Nepal, who's going to join us on this broadcast. महातो जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जो लोग आज सड़क पर उतरे उनका ये कहना है कि ये सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं है, इससे भी ऊपर की बातें हैं, वो है करप्शन को लेकर, केपी शर्मा ओली साहब के करप्शन को लेकर। आप क्या कहेंगे महातो साहब कि आखिरकार किस कारण लोग सड़क पर उतर गए हैं इस वक्त काठमांडू में? अभी जो नौजवानों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो काठमांडू लगाए देश के विभिन्न भागों में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसका वजह आपने ठीक कहा, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लगे प्रतिबंध का कारण नहीं है। यहाँ का कुशासन, जो सरकार का कुशासन है, करप्शन लगाए, जो ढेर सारा सवाल है, जनता का फ्रस्ट्रेशन है, अभी वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। यहाँ से लाखों लाख नौजवान देश छोड़कर जाने के लिए बाध्य हुआ। यहाँ नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित है नेपाल में। यहाँ का कुशासन न उसको रोजगारी दे पा रही है, न उसका कोई व्यवस्था कर पा रही है, और करप्शन इतना ज्यादा है कि देश में लूट तंत्र हावी है। यहाँ जितना बड़ा करप्शन हुआ है नेपाल में, जितना कांड हुआ है करप्शन के ऊपर, सारे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, जो सत्ता में सरकार में है, इनके नेताओं के द्वारा हुआ है। ये रिकॉर्डेड है, ये सारी दुनिया जानती है। तो पीपुल का फ्रस्ट्रेशन वहां है, आपने ठीक कहा। पीपुल का फ्रस्ट्रेशन नेपाल के शासन से है, ये डील भी नहीं कर पा रहा है, पीपुल को एड्रेस नहीं कर पा रहा किसी मामले में भी। अब जब वो कहते हैं, राजेंद्र जी, जब वो कहते हैं कि ये करप्शन का मामला है, तो ये सवाल तो ये उठेगा कि अब तक ऑपोजिशन पार्टीज इसको लेकर क्यों नहीं बात कर रही है, और करप्शन, कौन सी करप्शन की बातें हो रही है? क्योंकि एक तरह से देखिए, जो तस्वीरें आ रहे हैं, कुछ महीने पहले ऐसी ही तस्वीर बांग्लादेश से निकल कर आ रही थी। इसलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक तरह से क्या पैटर्न बन रहा है कि जो सरकारें बने हैं उसे हटाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है कि लोकतंत्र में ऐसी सरकार बनती ही नहीं है जो नेपाल में बनी है। लोकतंत्र में फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी मिल करके सरकार विशेष परिस्थिति बनती है जब देश में संकट हो। लेकिन नेपाल में क्या हुआ, ये पहली पार्टी और दूसरी पार्टी, कांग्रेस और यूएमएल पार्टी मिल करके यहाँ सरकार बनाई है। ये सरकार बनाने का वजह क्या? एक ही वजह है, सबसे बड़ा वजह है ये जो करप्शन जो ये लोग किया, इस करप्शन के ऊपर ढाक छोड़ करने का, इसको क्या बता सकते हैं कि क्या करप्शन की बात हो रही है? करप्शन आप अगर विस्तार से बात करके बताएं राजेंद्र जी, क्या करप्शन है, क्या करप्शन हो रही है नेपाल में इस वक्त जो लोगों को नहीं पता? ऐसा है, यहाँ तो सारे नेपाली जनता को पता है जितना यहाँ कांड हुआ करप्शन के मामले में। जैसे भूटानी शरणार्थी का कांड हुआ, अपने देश के नागरिकों को भूटानी बना करके देश से बाहर भेजने का काम हुआ। यहाँ सरकारी जो जमीन था बालुआटार, जो प्राइम मिनिस्टर निवास है, उसको बेचा गया है, उसमें करप्शन किया है लोग। यहाँ टी एस्टेट, केपी ओली का करप्शन, वहाँ उसके गृह जिला ढाबा में टी एस्टेट का जो जमीन है उस पर करप्शन हुआ। यहाँ तो ढेर दर्जनों वाइट बड़ी ढेर सारे दर्जनों करप्शन है, जिस पर ये बड़ी बड़ी पार्टी के नेता लोग इस पर भ्रष्टाचार किया। तो यहाँ कोई मामला बाकी नहीं है। यहाँ शून्य कांड से लेकर के ढेर सारे कांड हुआ नेपाल में, और देश को लूटा है, दोनों हाथ से लूटा है लोग। जनता वैसी नाराज नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन वैसे नहीं आया। एक बात सड़क पर उठी रही थी, लेकिन युवाओं ने इस बात को बहुत ही जोर तोड़ के साथ आज सड़क पर लाया। तो ये तो करप्शन के मामले में तो रिकॉर्ड ब्रेक ही कर दिया है यहाँ के शासन। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इस वक्त जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है काठमांडू में, ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रखा जाए या बैन कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जब लोग सड़कों पर आ चुके हैं तो ये कहना बहुत जरूरी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पास इस वक्त
क्या उपाय है, क्या बचा है, क्या कुछ समाधान है इस पूरे विषय को लेकर? ऐसा है कि इतना बड़ा अपराध है सरकार किया है कि इसको जो भी कहा जाए, जितना भी दंड दिया जाए कम ही होगा। ये निहत्थे जनता युवाओं के ऊपर जो प्रहार किया है, जो दमन किया है, जो हत्या किया है, दर्जनों युवाओं को हत्या किया है, गोली मारा है, शांतिपूर्ण पीसफुल मूवमेंट के ऊपर इतना बड़ा दमन, बर्बर दमन किया है, सबसे बड़े अक्षम्य अपराध है सरकार के लिए। और सोशल मीडिया से तो ऐसे ही लगना ही नहीं चाहिए था। विदाउट कोई अल्टरनेटिव, बिना दिए हुए इस प्रकार से सारे सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने का एक ही वजह था। वजह यह था कि सोशल मीडिया के मार्फत यहाँ की जनता, यहाँ का युवा पीढ़ी अपनी बात को कह रहा था। एक करप्शन का ही विरोध चल रहा था, यहाँ का कुशासन का विरोध चल रहा था। सरकार का जो भी किसी सेक्टर में संतोषजनक यहाँ का डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, संतोषजनक इसका गतिविधि नहीं है। तो ये तो पीपुल का आक्रोश तो था ही, उस आक्रोश को ये शांतिपूर्ण तरीके से ये लाया गया, प्रदर्शन के तहत लाया गया। अभी इस पर दमन किया, गोली चला, दर्जनों लोग घायल, सैकड़ों लोग एक घायल हुए हैं, दर्जनों लोग शहादत प्राप्त किया है। तो इस अवस्था में सोशल मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना था, उसको तो इमीडिएट हटाना चाहिए। और बाकी अब ये अपराधी सरकार के साथ क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। ये अपराधी सरकार है, जनता का भलाई के लिए, जनता के हित के लिए राजेंद्र जी नहीं रही है। ऐसे ये दो मेजर पार्टी सारे अपने अपराध को, सारे अपने गलती को छिपाने के लिए ऐसा प्रथम पार्टी और दूसरी पार्टी ये सरकार बना करके इस देश में शासन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र महातो, former Deputy Prime Minister of Nepal, joining us on this broadcast, taking on the KP Sharma Oli government. Ladies and gentlemen, in fact, what we are going to do right now is going to take you through what's really happening on the ground. Republic TV, in fact, has been tracking every development on ground zero. My colleague Surendra Fuyal, in fact, brings you the latest from near the very zone which has now been put under curfew. In fact, multiple areas in central Kathmandu are now under curfew. This is after the protesters had barged inside the parliament. Listen to what Surendra Fuyal has for you. I'm at Chauba Hill Stupa now, a Buddhist stupa where people are walking around the temple praying for peace, as they always do. But looking at what happened, it all started after KP Oli government in Nepal imposed a ban on social media sites, 26 of them that ignored Nepal's appeal to get registered at Nepal's concerned authorities. And now, as a result, when Gen Z members descended on the streets of not just Kathmandu, but also other towns around the country, the scenes were quite disturbing, quite chaotic. This is Ring Road, and clearly because of the protest all day, the traffic is still struggling to return to normal, and people are having a hard time traveling around the city. Hopefully it will get normal in the evening when the KP Oli cabinet is having an emergency meeting, and it is expected to make a major decision regarding the ban. Whatever happened in Kathmandu today was completely unexpected. Nobody expected the Gen Z protests to be this big, but that's what happened when it became huge with thousands of protesters, and then later police resorting to firing tear gas and rubber bullets. At the end of the day, as of now, almost 6 p.m. in Kathmandu, 15 dead, and almost 200 injured are receiving treatment at several hospitals. As I can see on the streets, people look very dazed and confused, looking back at what happened during the day.
Let me now take you through the other exclusive story that I'm getting to you tonight. Ladies and gentlemen, this is coming in from Uttar Pradesh, where a shocking and a deeply disturbing conspiracy is unraveled in the heart of Uttar Pradesh in Lucknow. A massive controversy has erupted over allegations of coerced religious conversions. Now, at the center of this storm is Maulana Shamshul, a cleric from Sant Kabir Nagar, now under intense scrutiny by the Lucknow police for suspected ties to Pakistan's notorious intelligence agency, the ISI. Authorities are now investigating claims that Shamshul's sprawling network, allegedly funded by foreign sources, including Pakistan, is promoting anti-national activities. Now, this comes on the heels of another explosive case in Balrampur, where the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad has basically filed a charge sheet against self-styled Godman, that's Changur Baba, and his son Mehboob, accused of orchestrating a sinister conversion racket. Now, with witness statements, the ATS has uncovered a chilling plot to Islamize India by 2047. This is the full story. A massive conversion controversy is unfolding in Lucknow. The Vishwa Hindu Raksha Parishad has raised concerns about an alleged ongoing conversion on Hindus by the ISI. Maulana Shamshul, a cleric based in Sant Kabir Nagar, has come under the radar of Lucknow police for alleged links with Pakistan's intelligence agency, the ISI. Authorities suspect his extensive network, spread across several countries including Pakistan, to be involved in anti-national activities, including promoting the Free Kashmir agenda. Sources confirmed that Shamshul's operations are being probed for receiving large-scale foreign funding, especially from Pakistan and ISI, which is reportedly being funneled into a massive madrasa complex in Sant Kabir Nagar district. The institution, which claims to provide religious education to hundreds of students, is now allegedly a hub for indoctrination, radicalization, and conversion. Republic has got the first response from one of the victims. He says that Sant Kabir Nagar is turning into a stronghold for the ISI. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में शमसुल हुदा नाम के एक व्यक्ति का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से सीधा सीधा आना जाना है। आईएसआई का एजेंट कहा जा रहा है, स्लीपर सेल कहा जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए की उसने संपत्ति बनाई है, बड़े बड़े उसने मदरसे और मस्जिदें बनवाई हुई है, और जो उसके घर के जो लोग हैं वो सीधा सीधा पाकिस्तान से लेकर कई देशों में उनका नेटवर्क है, कई एम्बेसी में आना जाना है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों से आए हुए लखनऊ पहुंचे हुए एक व्यक्ति हैं। पहले इनके बारे में सर आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मैं अब्दुल हकीम खान, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मौलाना शमसुल हुदा ये आईएसआई का एजेंट है। ये संत कबीर नगर का रहने वाला है। सन 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। ये वो क्या नाम है, ये अभी भी रहता है यूपी में संत कबीर नगर में कि अब ब्रिटेन रहने लगा। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। इसके आईएसआई से संबंध है। 5 अगस्त को फ्री कश्मीर साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में जो सारे आतंकवादी संगठन सारे लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ये दोनों लोग कौन है? एक तो ये नवाज शरीफ का भतीजा हो गया। We'll have to cut out of that as Dr. S. Jaishankar is now addressing the virtual BRICS summit, which is underway. In fact, the virtual BRICS summit has been called in. Listen in. Ground between our respective national policies and to act on that basis. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism
would be appropriate. The world as a collective is seeking a stable and predictable environment for trade and investment. At the same time, it is imperative that economic practices are fair, transparent, and to everyone's benefit. When there are multiple disruptions, our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. Not just that, it is also essential that we democratize manufacturing and production and encourage their growth in different geographies. Progress in that regard will contribute to regional self-sufficiency and relieve anxieties at times of uncertainties. Your Highness, Excellencies, trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. We hope that this realization will be part of the takeaways from today's meeting. The international trading system is based on the foundational principles of open, fair, transparent, non-discriminatory, inclusive, equitable, and a rules-based approach with special and differential treatment for developing countries. India strongly believes that this should be protected and nurtured. Excellencies, the world today also seeks an urgent resolution of ongoing conflicts. The Global South has experienced a deterioration in its food, energy, and fertilizer security. Where shipping is targeted, not just trade, but livelihoods also suffer. A selective protection cannot be a global answer. An early end to the hostilities and undertaking diplomacy to ensure a durable solution is the obvious pathway before us. The working of international organizations in the last few years has witnessed major shortfalls in many areas. On key issues, we have unfortunately seen that gridlocks have undermined the search for common ground. These experiences have only made the case for reformed multilateralism generally, and that of the United Nations and its Security Council specifically, more urgent. The BRICS have taken a positive view of this need for reform, and we expect that it would collectively become a strong voice for much awaited change. Excellencies, even as the world grapples with policy changes, we must not lose sight of bigger concerns, especially climate change. Sadly, both climate action and climate justice are currently slipping in global priorities. We need new thinking and initiatives as well. I commend the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance for your consideration. In conclusion, let me again thank President Lula da Silva for convening us today and for the opportunity to present India's views and positions. I thank you. Well, that's all that we could pack in this edition of This is Exclusive. Coming up, trending with my colleague Rajendra.